this is the latest fallout of this liquor gate. The Home Ministry has suspended Gopi Krishna, the former Excise Commissioner, and Anand Kumar Tiwari, the former Deputy Excise Commissioner of Delhi. The Lieutenant Governor had recommended for their suspension to the Ministry of Home Affairs. Pallavi is joining me on the phone line. Pallavi, what exactly is the role of Gopi Krishna and also Anand Kumar Tiwari? So according to allegations, they were very much working in conduit or in connivance with those allegations we are seeing against the Deputy Chief Minister, Manish Sisodia. So the allegation against them specifically is that they tinkered with their position. They facilitated the misuse of an excise policy, how it was changed overnight to benefit a certain group of people and corporates. And based on the recommendations of the LG, because according to sources, he has definite information and evidence to pin down the former excise commissioner. And I think this first step, which has been taken by the Home Ministry of the suspension of the former excise commissioner, is very, very significant, which means, the news tightens on Manish Sisodia, and many of them found a mention in the FIR and the charge sheet. All right, Pallavi, thank you so much for joining us. Let me bring in my guests at this hour on News Epicenter. Shazia Ilmi, spokesperson of the BJP, Dr. Anika Mohrotra is spokesperson of the Congress, Akshay Marathi representing the Aam Aadmi Party, Yashwardhan Azad, former IPS officer. We also have Naresh Goyal, who is the president of Delhi Liquor Traders Association. Naresh Goyal जी, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगी. इस पूरी पॉलिसी से किसको फायदा हुआ? क्योंकि जहां तक एक्सचेकर का सवाल है, उनको तो मैसिव लॉस हुआ है. जी मैम, बिल्कुल आपका जो कहना है बिल्कुल सही है. इससे एक्सचेकर को बहुत नुकसान हुआ है, इससे रिटेलर को बहुत नुकसान हुआ है, जो 15-20 साल से लोग चला रहे थे उसको नुकसान हुआ है, दिल्ली वासियों को बहुत नुकसान हुआ है इस नई पॉलिसी से. इस पॉलिसी से अगर किसी को वाकई फायदा हुआ है तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो फॉरेन कंपनीज हैं, जो इंडिया के अंदर 2-3 लीडिंग कंपनी है, सिर्फ उनका मार्केट शेयर बढ़ा है और उनके जो इस ईयर में उनके जो प्रॉफिट्स हैं, उनके अंदर मैं कहूँगा 10 टाइम्स का प्रॉफिट उन्होंने गेन किया है. 10 टाइम्स कैसे आप बोल रहे हैं? इसमें सिर्फ और मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है, जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनीज है, ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को इसके अंदर बेनिफिशियरी रहे. बाकी इसके अंदर होलसेलर और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दो ही बेनिफिशियरी रहे. बाकी इसमें रिटेलर्स ने भी खोया, दिल्ली वासियों ने भी खोया और एक्सचेकर का भी उसमें बहुत नुकसान. नरेश गोयल जी, ये कैबिनेट नोट है जो लिखा गया था जब ये पूरी पॉलिसी रोल बैक हुई है. उन लोगों ने ये कहा है साफ तौर पर, विंडफॉल गेन्स टू लाइसेंस होल्डर्स. तो क्या जो लाइसेंस भी दिया गया वो गलत तरीके से दिया गया था? बिल्कुल मैम, इसके अंदर क्या था कि पहले जो है पर जितनी बोतल बेचोगे उतनी बोतल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी. लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक लमसम एक्साइज ड्यूटी ली गई, लाइसेंस फीस के नाम पे उसको समशुम्ड कर दिया गया. तो जब उसको, अब इससे क्या हुआ, दिल्ली के अंदर शराब की बिक्री तो दुगनी हो गई और रेवेन्यू आधा रह गया. 632 दुकानें दिल्ली के अंदर सरकारी और प्राइवेट मिला के 6400 करोड़ रुपए दे रहे थे. 21 ड्राई डे कम कर दिए, उम्र घटा दी, सब कुछ करने के बावजूद लंबी लंबी लाइनें दिल्ली वालों ने देखी, सब कुछ देखा और रेवेन्यू का लॉस हो गया. तो पैसा गया कहाँ? आखिर इसके अंदर हमने पिटीशन भी डाली थी, दिल्ली लिकर ट्रेड एसोसिएशन ने, हाई कोर्ट ने पिटीशन भी डाली, सब कुछ हमने कहा, हमने 3 बार मिले भी. हमने कहा कि जी ये इस कंपनियों से सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को बेनिफिट हुआ है तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड के अंदर है, ये उनके सपोर्ट के लिए बेची रही, बाकी सबके लिए लॉस रहा. आपने जो ये कहा कि आप मिले थे, क्या आपने ये कंसर्न्स दिल्ली सरकार के किसी रिप्रेजेंटेटिव को बताया था, या मनीष सिसोदिया जी को बताया था, अरविंद केजरीवाल जी को बताया था? जी मैम, हमने मिलने के लिए समय मांगा, हमें समय नहीं मिला. हमें बार बार मिला हमने, लेकिन रिटर्न प्रेजेंटेशन हमने दी. उसके बाद इसकी पॉलिसी भी जो है, दिल्ली लिकर ट्रेड एसोसिएशन को इसकी पॉलिसी पब्लिक नहीं की गई थी. दिल्ली लिकर ट्रेड एसोसिएशन ने एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल करी. ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश के बाद टेंडर आ गया था, लेकिन पॉलिसी जो है प्रीबिड के बाद इन्होंने दी. इसको पॉलिसी को भी छिपाया गया. मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या कारण थे, क्या बातचीत थी, पर इस पॉलिसी को छुपाया गया. और ये
पूरी की पूरी पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ने पैसा कमाया है, बाकी सबने बिल्कुल पैसा खोया है, और जो 15-20 साल से लोग जुड़े हुए थे वो भी बेरोजगार हो गए। चलिए और अक्षय ये बड़े बड़े जी। कार्टल बनाए गए इसके अंदर, और इससे एक्सचेकर का अगर फायदा हो जाता, दिल्ली वासियों को फायदा हो जाता। 1+1 बेची गई, 1+1 से भी जो गरीब आदमी है जिसका कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर शराब पीने पे, उसके स्वास्थ्य भी खराब हुआ इसमें। दिल्ली में सड़कों पे जाम लगे। If anything, there was everything wrong about this excise policy, is what Naresh Goyal there is saying. You know, for the longest time, what we are seeing is that the Aam Aadmi Party has not really answered specific question on policy failure. Why was this policy rolled back? Instead, what we are seeing is about BJP calling Mr. Manish Sisodia, and the entire narrative is about everything but the policy. Maria, first of all, what you're saying is absolutely right. The reason that Aam Aadmi Party has been talking about the motive and the credibility of the BJP instead of going into the specifics is because you have to look at the track record and the credibility of the last 8 years. The BJP has been making allegations against Aam Aadmi Party for the last 8 years continuously, but not a single allegation has it been able to prove in a court of law. All these premier investigating agencies, whether it's CBI, ED, Delhi police, when they go to court with these cases, they get blasted by the court saying that you're doing vendetta politics against Aam Aadmi Party. So under what credibility are we supposed to believe the BJP's allegations today? Now, if we have to go into the specifics, I'm very happy to do that. But the question is that if the Aam Aadmi Party wanted to roll back a policy that was failing, that is a question of policy. It is not a question of corruption or a scam. But the reasons that we had to roll back the policy have been articulated very clearly by the Chief Minister Arvind Kejriwal today in his press conference in Gujarat. Now, let me take you through the chronology. In 2021, we introduced this liquor policy, which we think is the best liquor policy that the country has seen, because what it did is it actually rationalized the spread and the distribution of liquor vends across the city. What used to happen earlier is that there was a small area of Delhi which had the Sarkari Thekas, as if you are from Delhi, you might know this. And there was a large part of Delhi which was called a non-conforming area where no liquor vends were allowed. So in those parts of the city, you had a lot of illegal liquor being sold. So we rationalized this policy and brought the entire city under Akshay, the formal it is about legal this structure. Policy Now, that it is being said that there has been a deliberate and gross procedural lapses to provide post-tender undue benefits to liquor licensees. This is what has been said, and that there are irregularities in formulation and execution of Delhi excise policy brought in November last year is what the CBI is saying. Maria, let me just finish my point. Yes. All these allegations we are saying are false, but let me go into the very specific question of why we rolled it back. Now, after we introduced this policy, the Lieutenant Governor of Delhi, and this is all a matter of public record, he sent back our decision to the government saying that the Delhi police, the MCD, the DDA is not agreeing to give permission to open liquor stores in those non-conforming areas. Now, just think about it. We had a situation where a lot of private vendors submitted their license fees, signed up to open up shops in those areas, but they were stopped and prevented by the central government and their agencies from doing so. Now, as a responsible government, where we wanted to actually improve the situation and did not want corruption to flourish like it did in the past, we said, fine, if the LG and the BJP are going to come in the way, let's get rid of this policy and move back to the old one until the CBI investigates this case and clears Mr. Sisodia. So now that the CBI